नमस्कार दोस्तों. In today's video, we will be discussing about best test series for UPSC Prelims exams 2026. This will be my honest review. Now, firstly, let me introduce myself. This is My name is Sagar. I had done MTech and also worked as assistant professor. I have given 2 UPSC mains, and this is my YouTube channel. So, let's begin. एक कॉमन क्वेश्चन रहता है विच इज द बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर यूपीएससी प्रिलिमिनरी एग्जाम्स. देखो, यूपीएससी प्रिलिमिनरी जो एग्जाम है, इट्स नॉट अबाउट हाउ मच यू स्टडी, इट्स अबाउट हाउ विल हाउ वेल यू प्रैक्टिस योर एमसीक्यूज. इन आज के वीडियो में आई विल गिव यू a clear, honest and a practical review of the best test available in the market based on quality, relevance and return of time invested. I will also tell which test you should avoid, how many tests are actually enough. So let's begin. Now, before naming any institute, let's discuss what makes a good prelim test series. This test series must have UPSC level questions, not random or factual overload, balanced difficulty, not too easy, not too tough, strong explanation, learning becomes easy, full length टेस्ट और सेक्शनल टेस्ट दोनों होने चाहिए, प्रॉपर कवरेज ऑफ PYQs and new trends. If a test series fail here, even 50 tests won't help you. Now I have ranked test series. Now the top three rank will be the Insights IAS test series. Now I will discuss some strengths of this Insight test series. So firstly is the wide coverage syllabus. It will include current affairs orientation also. It is definitely helpful for revision purpose, but it do have some limitations. So difficulty level, and these questions are very factual. Comparatively, this Insight Science is considered a difficult test series, but for whom will this test series help? If you practice daily, supplementary revision अगर आप करते हो, or if you are following Insight's current affairs, then this test series is definitely for you. The next top two rank test series according to me will be the Forum IS. Now Forum IS is known for some its good points. Firstly, कुछ strengths है, let's discuss that. Analytical questions होते हैं, जो eliminating guesswork होता है वो उसमें नहीं रह होता. You can't simply use elimination technique here. इसमें strong explanation दिया होता है, so that is a plus point. Some limitations are there, yes. Sometimes the question जो है वो slightly difficult feel हो सकता है, but that's a good mental exercise you can say. Now ये किन स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, ये जो एस्पिरेंट्स है जिसने एक दो अटेम्प्ट दिए हैं उनके लिए दिस इज बेस्ट वन. अगर फ्रेशर हो तो इट विल बी अ डिफिकल्ट फॉर यू सिचुएशन फॉर यू, और जो स्कोर का टारगेट रखते हैं 90+, तो उनके लिए इट्स डेफिनेटली यस. इफ यू want to think like a UPSC examiner, Forum IS is a good choice. Now the top IS preliminary test series is Vision IS.
Now I will disclose the reasons why or the strengths. The questions are closely to the actual UPSC exam question. Excellent explanation is given with conceptual clarity, and sufficient focus is also given on current affair parts. Full length test simulations are easily available. Then for beginners, then the next point is this टेस्ट सीरीज इज बेस्ट फॉर बसली बिगिनर्स, रिपीटर्स के लिए भी अच्छा है, और जो सीरियस एस्पिरेंट्स है उनके लिए मस्ट है. बट एक एडवाइस है, डोंट फोकस ऑन रैंक एंड फोकस ऑन व्हाई यू गॉट द आंसर रॉन्ग. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज टेस्ट सीरीज you should be careful about. Some important notes है यहाँ पे, you should avoid while giving the test, or you should avoid this test series. जो पीवाई क्यूज जो होते हैं वो डायरेक्टली कॉपी अगर हो रहे हैं तो अवॉइड दैट. रैंडम स्टैटिक फैक्ट्स अगर पूछ रहे हैं तो अवॉइड दैट. पुअर एक्सप्लेनेशन है तो डेफिनेटली अवॉइड दैट टेस्ट सीरीज. जस्ट इंक्रीजिंग स्कोर के लिए मार्केटिंग अगर कोई टेस्ट कर रहा है तो यू शुड अवॉइड दैट. यू हैव टू फोकस ऑन क्वालिटी देन क्वांटिटी. मार्क्स not important. Simulated exercise must be done. अगला क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी टेस्ट आर एक्चुअली इनफ. बेसिक क्वेश्चन, बेसिक रिक्वायरमेंट जो है, कोई आपको यू डोंट नीड 100 टेस्ट. Ideally speaking, 25 to 30 good quality tests are sufficient, but you have to revise each test 2 to 3 times. You have to maintain error note और notebook या notes बनाओ. One well analyzed test is always greater than 5 unanalyzed test. अगला पॉइंट जो होता है, हाउ टू यूज टेस्ट सीरीज effectively. Some golden rules are there. Firstly, attempt the test in exam like condition. Time limit रखो. Do not disturb mode. Analyze the answer key on the same day. Explanation जो रहता है वो वाला. Focus on wrong and जो गेस किए हुए हैं वो क्वेश्चन. लिंक एक्सप्लेनेशन विथ एनसीईआरटी एंड स्टैंडर्ड बुक्स. कहाँ से आ रहे हैं, इज टॉपिक रेलेवेंट. रिवाइज द मिस्टेक every 15 days. Note down new points or facts in notes. देखो, टेस्ट सीरीज इज नॉट फॉर जजिंग योर इंटेलिजेंस. इट इज फॉर ट्रेनिंग योर ब्रेन फॉर एक्चुअल एग्जाम. तो फाइनल वर्डिक्ट मेरा ये है, मेरे पर्सनल रिकमेंडेशन से. विजन आईएएस इज ऑलवेज सेफ एंड रिलायबल. नेक्स्ट आता है फोरम आईएएस. एनालिटिकल डेप्थ ज़्यादा है, इनसाइट्स है, ये सप्लीमेंट्री काम हो सकता है. यू कैन चूज वन मेन टेस्ट सीरीज एंड optionally one as secondary. Don't run behind all institutes. So that's all for today's video. If you have liked, please like, share and subscribe to
Margdarshan by Sagar. Do comment which test are you using for preliminary test 2026. Let's see you in the next video. This is my YouTube channel. Until then, stay disciplined, stay consistent. Jai Hind.